Leibnitz rule is used to find the derivative when the function is under integral sign. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जब फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर है और तब आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इफ़ यू नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव of this, then we use Leibnitz rule, or sometimes it is called Newton Leibnitz rule. So first of all, I shall read the rule. You should remember this rule, and thereafter we shall apply those rules to solve these two questions of IITjam 2006 और 2014 में। ये जो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं IITjam में, जो कि बिल्कुल इस रूल पे बेस्ड है, I shall discuss these two questions. So first of all, what is Leibniz rule or Newton Leibniz rule? If G is a continuous on closed and bounded interval AB, and this phi x and psi x, remember this phi x is the lower limit and this psi x, which is the function of x, is the upper limit. These two should be differentiable functions whose values lies in this interval. Then d by dx of integration from phi x to psi x g of t dt is equals to, think, you are given g of t dt, then you have to put this upper limit in place of t, means g of psi x into psi dash x, means we have to take the derivative of this. That's why the condition was this, कि psi x differentiable होना चाहिए, and minus g of phi x into phi dash x. मतलब देखिए कितना सिंपल है। g of t dt है, first of all g of psi x into psi dash x minus g of phi x into phi dash x, and कंप्लीटली बेस्ड है यह क्वेश्चन IITjam 2006 का, जो कि पहले डिस्क्रिप्टिव वाला होता था, तो 6 मार्क्स में पूछा गया था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, fx आपको गिवन है, fx इज इंटीग्रेशन फ्रॉम sin x टू cos x एंड e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, दिस इज द fx and you need to find f dash pi by 4. So first of all we shall find f dash x. So f dash x means what? We have differentiated this with respect to x. Now you need to differentiate in the RHS also. So d by dx sin x to cos x and e to the power minus t square dt. All right, now you can see what the same thing is here, g of t. So in place of g of t you have e to the power minus t square. What the rule says, g of phi of x, means in place of t you need to put phi x, sorry psi x. So in place of t we shall put cos x, so it will become e to the power minus cos square x. This has done. In the next case, psi dash x means you have to differentiate this upper limit, means you need to differentiate this one. So differentiation of cos x, psi dash x means what? Differentiation of cos x, which is minus sin x. Okay, got it? Why have I written this one? हमने minus sin x क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव चाहिए, यहाँ पे अपर लिमिट cos x है, उसका डेरिवेटिव माइनस sin x लिख दिया। उसके बाद माइनस है तो माइनस दीजिए, g ऑफ phi x मतलब लोअर लिमिट रखना है t के जगह पे, तो अब यहाँ पे t के जगह पे लोअर लिमिट sin x है, ये हो जाएगा e का पावर माइनस sin स्क्वायर x। ऑल राइट, एंड फिर उसके बाद क्या है, यहाँ तक काम हो चुका है। Now phi dash x means we have to get the derivative of this function. So we have to get the derivative of this function. So derivative of sin x is what? Cos x. All right. So this is what? Minus e to the power minus cos square x into sin x minus e to the power
minus sin square x into cos x. Is this all right? And don't forget, this is your f dash x. So your f dash x is this thing, but you need what? F dash pi by 4, and therefore putting x is equals to pi by 4 in this. Okay, this is your f dash x. Now call it equation number 1. So putting x is equals to pi by 4 in 1. So in 1, this is f dash x, so it will become f dash pi by 4, and this is e to the power minus cos square pi by 4 into sin pi by 4 minus e to the power minus sin square pi by 4 into cos pi by 4. Is this all right? Now e to the power cos pi by 4 is 1 by root 2. So a square of 1 by root 2 is what? 1 by 2. So it will become minus 1 by 2 into sin pi by 4 is 1 by root 2 minus, okay, minus sign is here, don't forget this minus is here. Okay, minus e to the power वो था ना, तो माइनस आ ही रहा है, माइनस e to the power minus sin square pi by 4 is what? Sin pi by 4 is 1 by root 2, therefore it will become 1 by 2. So minus 1 by 2 and into 1 by root 2. Cos pi by 4 is also 1 by root 2. So it becomes what? Minus e to the power minus 1 by 2 into 1 by root 2 minus e to the power minus 1 by 2 into 1 by root 2. So this will become minus 2 into e to the power minus 1 by 2 upon root 2. Is this all right? Okay, minus of this and minus of this, so minus and minus, minus 2 this thing. Now it will become minus root 2 upon e to the power 1 by 2. How? Because ये root 2 से ये जाएगा तो root 2 बचेगा, और e का पावर माइनस 1 बाई 2 है तो डिनोमिनेटर में ऐसे लिख लिया. अब e का पावर 1 बाई 2 को आप ये भी तो लिख सकता है, जैसे माइनस रूट 2 अपॉन अंडर रूट e भी लिख सकता है, और ये क्या है एक्चुअल में माइनस अंडर रूट 2 बाई e, बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को ही, तो माइनस अंडर रूट 2 बाई e हो जाएगा. तो माइनस अंडर रूट 2 बाई e किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में. सो यस, यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज बी. अब जो दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे. The second question is from IITjam 2014 and it was a question of just 1 mark. And why? You can see the given thing was what? A function f from r to r. एक function given था x plus 0 to x f of t dt is equals to e to the power x minus 1. इस तरीके से एक function given था, और एक set given था x belongs to r such that fx lies between 1 से 2. तो कहता है कि इसमें कौन सा इंटरवल है, x किस इंटरवल में लाई करेगा. इफ fx lies between this, तो ये जो सेट है यह सेट किस इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, यही था क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में आपको fx निकालने की ज़रूरत होगी. यू नीड टू फाइंड fx एंड देन यू कैन डिसाइड योर x लाइज इन विच इंटरवल. ओके, so we need to find fx, so we have to get rid of this integral sign, and for that what shall we do? Differentiating both sides with respect to x. हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोनों ही तरफ डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये हो जाएगा dx by dx, ये हो जाएगा d by dx 0 to x f of t dt, और ये हो जाएगा d by dx e का पावर x माइनस d by dx ये 1. हम पूरा एक एक स्टेप लिख के बता रहा है. ऐसे तो ये मेंटल कैलकुलेशन करके 1 मिनट के विदिन 1 मिनट आप आंसर कर सकते हो, लेकिन अब ये dx by dx 1 हो जाएगा एंड प्लस अब यहाँ पे देखिए d by dx इंटीग्रल साइन क्या करेगा,
अपर लिमिट को इसमें रखेगा, यहाँ पे होता था ना g ऑफ साई x, तो यहाँ पे f ऑफ x होगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, एंड लोअर लिमिट 0 है तो बाकी ये वाला तो 0 ही हो जाएगा. सो दिस वन, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज एक्सपोनेंशियल, है ना, कितना बार भी डिफ्रेंशिएट करो e का पावर x को, यू शैल गेट e का पावर x, एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट इट बिकम्स 0. सो यू हैव व्हाट, you have fx is equals to e to the power x minus 1. Now in this set you can see your now we have to see means ये जो सेट है यह किस इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है. तो x बिलोंग्स टू r है और 1 लेस देन और इक्वल टू fx लेस देन और इक्वल टू 2 है. तो आप देख लो x बिलोंग्स टू r सच डैट 1 लेस देन और इक्वल टू fx क्या है आपका e का पावर x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 2. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, 1 ऐड कर दीजिए सब में, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस 1 2, इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये सिर्फ e का पावर x रह जाएगा बिकॉज माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, एंड लेस देन और इक्वल टू 2 प्लस 1 इट बिकम्स 3. Now this is x belongs to r, and you should take log 2 base e, means log with base e in each, then you will get what, e to the power x base e less than log 3 base e. All right, so this is x belongs to r, and this is your log 2 base e less than or equal to, this x will come in the coefficient, okay, by the properties of logarithm this x will come in the coefficient, and log e base e is 1, therefore it becomes x only, and less than or equal to log 3 base e. So this set represents what, which interval, log 2 base e to log 3 base e. So yes, option A is the correct option. All okay, so option A is the correct option. So I hope you understand. So in the next lecture, अगले लेक्चर में हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे. तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद.